welcome to Pulki. With this video हम अपना international eco का syllabus शुरू कर रहे हैं. So the first thing I want to do is I want to talk about what kind of paper international eco is. The first thing is international eco is based on कि हमारे पास जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जितना भी कैपिटल मूवमेंट्स होता है, एक्सचेंज रेट होता है, वो सब चीज़ों की डिटर्मिनेशन हम इस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल इको. इंटरनेशनल इको के दो बेसिक्स होते हैं. एक होता है विच इज़ रिलेटेड टू माइक्रो कॉन्सेप्ट्स, मतलब द स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स, विच मीन्स दैट कौन सी कंट्री क्या ट्रेड करेगी, क्या स्पेशलाइजेशन करेगी एंड एवरीथिंग. एंड द अदर इज मैक्रो. You know why I have divided into macro like this? This is actually structured like a micro. There are lots of diagrams, and it is not taking everything into context. There is no aggregation here. But here there is a lot of aggregation. It looks at things from an economy point of view altogether. That means the macro undertone. Having said that, there are three things that you need to know for international eco paper. पहली बात, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़्यादा important नहीं है. न्यूमेरिकल्स 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स के हैं एंड वो हम कर लेंगे एंड दैट्स इट. उसके अलावा उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे पूरे सिलेबस में ही नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ थियोरेटिकल पेपर. 2, आपके पास जो the reading that you have, which is Krugman, it's actually written more in a very like I'm talking to you manner, in the sense that it doesn't talk about very specific things. Like for example, अगर आपको याद हो जब आपने माइक्रो पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, तब आपने माइक्रो में वेरिएंट बुक पढ़ी थी. ना वेरिएंट इज रिटन मोर इन अ फॉर्म विच इज रिटन लाइक अ बुक. मतलब अगर उसमें एक लाइन भी लिखी है ना, लेट्स सपोज उसमें एक लाइन है, लेट्स से A says to B. अगर ये सिंपल सी भी लाइन है ना, तो आपको ना ये पूरी लाइन समझ में आनी चाहिए. अगर आपको इस लाइन के अंदर एक लेटर या एक वर्ड भी समझ नहीं आया ना, you can be tested upon that in the exam. Which is why in micro when we study things we had to really dig our way deep in and then understand the paper. लेकिन international eco ऐसा बिल्कुल नहीं है. This is written more in a very novel kind of a fashion, very like talking kind of a fashion, in which it's actually like if this is the point I want to make, if this is the point Krugman wants to make, Krugman will start somewhere here, he will round to this point. धीरे. So which means that this portion, even if you don't understand, or even if you understand ऊपर से, it doesn't matter. The point I'm trying to make is you don't have to know each word of the book. You don't have to know, or you don't have to read each para of the book. There are a lot of case studies which are given. There are a lot of incidences which have been cited out. There's a lot of evidence which has been collected. वो हमारे लिए redundant है, हमारे को उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. इसीलिए अब हम जब वीडियोस करेंगे ना, तो आपको ये कभी कभी लगेगा कि अच्छा चैप्टर तो इतना बड़ा था, मैम तो 5 वीडियोस में ही कवर करा दिया, 4 वीडियोस में ही कवर करा दिया. इट डजंट मैटर. चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ एविडेंसेस होंगी. एविडेंसेस हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते, बिकॉज दे आर नॉट टेस्टेड अपॉन इन द एग्जाम्स एट ऑल. एंड इवेंचुअली एविडेंस इज आल्सो पॉइंटिंग आउट टू समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट. उस एविडेंस के बेसिस पे ही तो वो कॉन्सेप्ट बना है या उसकी लिमिटेशन बनी है. तो उस एविडेंस को हम लोग ज़्यादा उसके बारे में बात करके वी आर जस्ट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स एंड नथिंग एल्स. So that is why a lot of the book, a lot of the reading is not really important. That's the second part. The third part about international eco is that international eco के अंदर हमारा जो syllabus है वो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा change हो गया है. So if you look at it from that perspective, it's just been changed very recently. So you really can't go really back into time to get the sample papers out. You have to be referring to the fairly current ones. And because the syllabus was so similar, then you will not even figure out, you'll not be able to get to know कि अच्छा हाँ ये वाला पुराने syllabus का है क्या नए syllabus का है. तो इसीलिए I would suggest that आप sample papers सिर्फ 2-3 साल पुराने देखिए, उससे पहले के मत देखिए. Having said all this, let's look at the structure of the paper. हमारे पास first unit है introduction. In the introduction unit, I have 2 chapters, which is chapter 1 and 2. Not important at all. इन दोनों chapters में से सिर्फ एक ही चीज़ important है, which is the gravity model. Important कह लो या ये कह लो कि हमें ये करनी है. इसके अलावा इन दोनों chapters को आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Alright? Whatever little you want to read or is given in the notes is sufficient. The second unit is theories of international trade, which is chapter 3 to chapter 8. Now this forms the crux of micro. This forms the crux of the section A. So हमारे पास 2 sections होते हैं international eco के पेपर में, section A and section B. जो section A है that is typically unit 1 to 3
एंड सेक्शन बी इज यूनिट 4। हमारे पास इसमें चॉइस आती है 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस की, और हमारे पास यहाँ पे चॉइस आती है 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास है देख सेकेंड यूनिट चैप्टर 3 टू चैप्टर 8 एंड थर्ड यूनिट विच इज चैप्टर 9, 10 एंड 12 सम पेजेस। सो हमारे पास ये जो पेजेस है, जो पेजेस है वो मेंशन है, 8 के भी पेजेस मेंशन है, चैप्टर 3 to 7 एंटायरिटी में। So it starts talking about why does trade happen, how does trade happen, what are the gains from trade, single factor, double factor, perfect competition, imperfect competition, anything and everything. And similarly, fourth unit जो है that is all macro based, which is the international macroeconomic policy, which has chapter 14, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5 chapters with limited page numbers in some of these, which we will cover as we go across the course. अब इसमें से तो हमारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते हैं। इस पोर्शन में हमारे न्यूमेरिकल्स थोड़े से हैं जो कि हम एज एंड व्हेन हमारे पास वो आएगा हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। Now the main thing is a lot of people say कि मैम हम selective study कर सकते हैं क्या? Since we have such a huge syllabus and we know the weightage of the units and everything, can we do selective? No, you can't. Questions ना cut across होते हैं. Suppose आपके पास question 1 है, उसमें पार्ट्स है A, B, C. तो एक A चैप्टर का होगा, B दूसरा चैप्टर होगा, तीसरा चैप्टर होगा। अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करी और सपोज आपको ये वाला पार्ट नहीं आता क्योंकि आपने ये वाला चैप्टर नहीं किया, तो आप तो ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं आंसर कर पाओगे ना। और चॉइस में हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा पार्ट्स जो आपने आंसर ना करे हो, सो या पढ़े ना हो। सो दैट इज व्हाई सिलेक्टिव स्टडीज कैन ओनली बी डन इफ यू आर विलिंग टू बी एबल टू अटेम्प्ट ओनली अ 60-65 मार्क। अगर आपको पूरा 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। इस सब्जेक्ट के अंदर कम स्कोर करना बहुत आसान है। यू हैव टू बी रियली थरो तो फॉर यू टू स्कोर वेल, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज हैं कि अगर आपने कहीं पे भी इफ यू ड्रॉप द बॉल यू कैन स्कोर रियली लेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पेपर के नोट्स आप खुद बनाएंगे। जब आप नोट्स खुद बनाते हैं, एंड आई हैव सेड दिस लाइक सो मेनी टाइम्स बिफोर इन अदर पेपर्स एज वेल, जब आप नोट्स खुद बनाते हैं तब आप उस चीज का एक आंसर या उस जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग खुद पेपर पे उतार रहे हैं। So when actually you do it again in the exams, it's not the first time ever you're writing that answer. Nobody is in the habit nowadays to practice the answers by writing. That is why अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हो तो एटलीस्ट अपने डबल तो लिखा, दूसरी बार लिख रहे हो ना एग्जाम के अंदर, पहली बार तो जाके लिख नहीं रहे हो, तो एटलीस्ट you'll be a little better off as compared to had you not written it at all. A lot better off rather. So that is why I would strongly suggest make your own notes. From the next video, I will start with the gravity model. Thank you.